Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 14. The name of our unit is plants, and today we are going to perform an independent activity जो कि बच्चे जो हैं वो खुद perform कर सकेंगे. मैं आपको guidelines दूंगी and then you will be able to perform this activity in your class or in your homes. So my dear students, what you need to do is before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer. So my dear students, what are common shapes of leaves? Oblong, oval, needle shaped, elliptical, these are the common shapes of leaves. So what is the shape of banana plant leaves? They are rectangular in shape. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards Islamic perspective. So Allah says in Quran, Allah is the one who has sent down water from the sky, and thereby we, Allah, produce diverse pairs of plants, each separate from the other. So my dear students, let's quickly move forward towards pre-reading questions. So quickly tell me that did you ever visit your nearby garden? क्या आप कभी अपने garden में कहीं करीब गए हैं? If yes, then tell me what was your experience about different plants? You observed different parts of the plants, जैसे कि roots, stem, leaves, और leaves भी जो है पे वो different तरह के होते हैं, है ना? कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ oval होते हैं, कुछ needle like होते हैं, कुछ oblong होते हैं. So these are different shapes of the leaves. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. For reading today, we are going to perform an independent activity given on page number 112. So how we are going to perform it, let's quickly have a look. So independent activity says that visit a garden in your school or nearby your house. Search for different shapes of leaves. Pluck one leaf from each plant. Dry and paste them on a chart paper. Next, what you will do is label the leaves as following. First, you will write down the name of the leaf, then leaf shape, then display your chart in the class. This will be done at the end. So my dear students, what you need to do is here, first of all, you will collect some leaves from the nearby garden. फिर आपने इनको ड्राई करना है. कुछ दिनों के लिए आप इनको बुक के अंदर सीधा सीधा रख दें, क्लीन करके, और किसी बुक के अंदर, मोटी बुक के अंदर आप रख दें. जब ये ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इनको एक चार्ट पेपर पर, या जिस तरीके से मैंने एक पेज पे पेस्ट किया है, इस तरीके से आप पेस्ट करें. हर लीफ के साथ आपने लिखना है लीफ प्लांट नेम and the name of the shape of the leaf. ठीक है? First, I have taken the leaf of a rose plant. So you will write here rose plant, rose. Then leaf shape is oval. Okay, you will write the shape leaf oval. Then comes the pomegranate. This is ये अनार के दरख्त का जो है वो पत्ता है. Pomegranate, and the shape of leaf is oblong. Then comes Java plant, यानी कि जामन के दरख्त का ये पत्ता है. This is also have as a oval shape leaf. This is yucca plant. ठीक है, ये yucca plant का लीव है. This is आप जैसे देख सकते हैं needle shaped narrow cylinder है ये. ठीक है, needle shape नहीं है, sorry, cylinder and narrow it is, just like grass जिस तरह होती है वो छोटी होती है, लेकिन this is just like it. ये आगे से भी और पीछे से भी, it is cylinder and narrow. So yucca, and the leaf shape is narrow and cylinder. ठीक है, so this is how you will perform this activity. Different plants के names जो हैं, आप ऐसे plants को select कीजिएगा जिनके names आपको easily पता है, जैसे कि apple tree हो गया, pomegranate हो गया, guava हो गया, rose plant, marigold. So इस तरीके के जो trees होते हैं उनके names आपको पता होते हैं, और फिर आप leaves जो हैं उनको easily identify कर सकते हैं. किस तरीके से? अपनी book open कीजिएगा, उसमें बहुत सारी leaves की shape हमने कल पढ़ी थी या प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. आप उनको साथ जो है इसको मैच कीजिएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. मैंने आपको एक सैंपल बताया है, अब आप इसको क्लास में भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो परफॉर्म इट एट योर होम्स. So my dear students, next what you will do is here you can see this is a grass, this is cylinder and narrow. तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्लांट्स जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गार्डन से. देन कम्स रोज, ये भी इजीली अवेलेबल होता है, इट हैज एन ओवल शेप. Then comes guava, ये भी easily हर जगह available होता है, so it has an ellipse shaped leaves. Then comes banana. Banana के leaves बहुत बड़े होते हैं, तो आप इसको चार्ट पेपर पे या उस पे पेस्ट नहीं कर सकते. So you can only write down the name of the tree. ठीक है, and the shape is rectangular. Then comes this is the beetle tree, and it has a heart shaped leaves. So इस तरीके से आप different जो leaves है उनको collect करके उनकी जो shapes हैं उनको note down कर सकते हैं. So now is the time for evaluation. So quickly tell me what are the different shapes of the leaf? Needle shape, narrow, cylinder. Then comes the lance shaped, heart shaped, layered shape,
oblong. So these are the different shapes of the leaves. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you will download the worksheet under this description box. मैं भी आपको show करती हूँ, but before that, quickly note down your homework. For homework, you will do MCQ number 1 and 5, given on page number 115. So this is the worksheet that you will do in practice. ये आपने क्लास में कंप्लीट करनी है. आपको मुख्तलिफ जो है लीव्स की शेप्स दी गई हैं. अब आपने इनको गेस करना है कि कौन से ट्री में होती है. सो रेक्टेंगुलर इज बनाना, then oval shape is the rose, then heart shape is beetle, then cylinder narrow and long is grass, layer shape is reddish, and ellipse shape is guava. So this is how you will write down the names of different plants which have different shaped leaves. So now is the time for wrap up. So my dear students, for wrap up, today we have learned that the leaves of one plant are different from other plant in shape. So my dear students, हमने मुख्तलिफ shapes पढ़ ली, हमने activity भी perform कर ली. अब आप हर shape को जो है identify कर सकते हैं. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.